Hi everyone, good evening. Good evening everyone. I hope I'm perfectly audible and visible to you. If that is the case, do let me know in the comment section or the chat box that I'm perfectly audible and visible to you. Though I'm checking it constantly, yeah, I hope I'm perfectly audible and visible. And on that note, we can start with today's analysis, right? Let me check I'm audible, right? Yeah, so yeah, I'm perfectly audible, right? So let's start with this particular session, and this is as usual. We have taken two articles, one from the Hindu and the other one is from the Indian Express, and we will be covering two important aspects of both these newspapers. One of them is related with the delimitation, and the other one is related to the removal motion which was initiated against Justice Yashwant Varma, but now Mr. Varma has resigned from his post, yet the Speaker of Lok Sabha, Mr. Om Birla, has decided that the report submitted by the inquiry committee, which was constituted under the Judges Inquiry Act 1968, would be laid down before the House. Now this is happening for the first time in India, that while a sitting judge has resigned from his post, the report of the inquiry committee would be submitted or laid down before the House, right? So these are two important news items related to the today's newspaper, which are extremely relevant for the students who will be appearing for CLAT and ALET 2027 along with the aspirants of 28, right? So on that note, we can start with today's session. So yeah, I mean, this is again the students who are facing any sort of problem in solving current affairs and static GK. They can subscribe to this particular course. This particular course is convened by Keshav Malpani sir. He himself will take all the classes. Now moving on to the next aspect, then we have a co-weighted GK question bank of 12 minutes to CLAT. Then the latest batch for the aspirants of CLAT and ALET 2027, Ujjwal Platinum, and for the aspirants of 28, we have another batch which is known as Praram. It was launched on 10th and 11th of July 2026. So any aspirant who will be writing CLAT and ALET in 2028, they can easily subscribe to this particular batch. Now moving on to the next point. Now I have some, I always had this problem, right? Now, this is the first concept that we have to discuss in detail, and it is related to the delimitation. Now, students, when we talk or when we hear this term delimitation, what is the first term that comes to anyone's mind? What is the first term when we hear the word delimitation? Anyone who would like to answer the question? What do you understand by the term when you or listen the word delimitation? To delimitation means nothing but to redraw the boundaries of a constituency as per the change in population, right? So basically पॉपुलेशन में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते हैं, उन पॉपुलेशन चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को हम रीड्रॉ करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिलिमिटेशन, राइट? So this particular concept or this article is related to the principle of delimitation, right? Now for the last 1.5 years, this entire debate around delimitation commission is attracting a lot of attention from the people all around the country, and specifically the southern states of India. They have a very skeptical view towards the delimitation, because they always believe that कि population control को लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा policy making की. इसकी वजह से जो southern states हैं उनका population comparatively जो northern states हैं उनसे कम है, और इस पर्टिकुलर चीज का लॉस उन्हें होगा डिलिमिटेशन के टाइम पे, बिकॉज कंपैरेटिवली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा जब लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको इंक्रीज करना है. करंटली लोकसभा का स्ट्रेंथ इज 543 एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 543 टू 850.
So now the southern states they have this apprehension कि जो हिंदी speaking states हैं या जो northern states हैं वहां पर ये जो seat increment होगा इसका maximum benefit किसको मिलेगा? Northern states को. Now there is another important logic which we have to take into consideration while we are discussing this particular topic, and that particular consideration is the contribution or the amount of contribution that is being made by the southern states. क्योंकि जब हम पूरे GDP में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं सो कंपैरेटिवली जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका शेयर ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स, राइट? सो द सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना कंट्रीब्यूट रफली 20% ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द यूनियन गवर्नमेंट. 3 northern states, Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh, contribute roughly 6% of the tax kitty. So the other important factor is that there is actually a debate between population and the amount of contribution. Population कम है but contribution ज्यादा है. Northern states का contribution GDP में कम है but उनकी population ज्यादा है. But delimitation का entire concept of delimitation is based upon population. It does not talk about the contribution in the tax of the government, right? Or the contribution in the GDP, right? So this is again a very minor consideration. Again, academically it is very relevant for us, but again can't do anything about it. Then what are the divergent trends, tax revenues and population say? So that we have already discussed. Now let's understand a very basic phenomenon that Uttar Pradesh is a state in India with the largest population. It has a population of approximately 250 million. 25 करोड़ 25 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीट्स कंट्रीब्यूट करता है लोकसभा में. टोटल 80 सीट्स कंट्रीब्यूट करता है, विच इज ऑलमोस्ट 16% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, right? So this again the debate whether we should talk about the tax contribution or not with reference to delimitation is absolutely irrelevant, because the idea of delimitation is not based upon the contribution made by the respective state governments, but it is purely based upon the population size. Then we have the population share. The southern population share is dropping, projected to hit 12% in 10 years, while the northern population share is rising, projected to hit 34%. Now the change in the population structure is quite visible. जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर काफी रैपिड पॉपुलेशन चेंज हुआ है, बट जो सदर्न स्टेट्स हैं उनमें इतना रैपिड पॉपुलेशन चेंज नहीं हुआ. इसका एक रीजन ये भी है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें कंपैरेटिवली लिटरेसी रेट जो है वो काफी पहले उन्होंने जो इंडिया का जो एवरेज था उसको उन्होंने बहुत पहले क्रॉस कर दिया था. तो जब एक फैमिली में एजुकेशन इस तरीके से जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस किया. इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हुई है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स. तो बेसिकली वो कई बार सदर्न स्टेट्स हैं उनका ये भी आर्ग्यूमेंट रहता है कि भाई अगर हमने कोई चीज एक गुड कॉज के लिए किया तो उसका हमें डिसएडवांटेज क्यों मिल रहा है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. The central debate: should a state's financial contribution to the nation be a factor in determining its parliamentary representation, especially when population and financial contribution move in completely opposite direction? So students, we had a lot of discussion around this particular point, that contribution in GDP and population are two things which are poles apart, so there is no relation in these things. You might adopt or you might use these arguments while debating that financial consideration should be considered by the government, but again academically this is not one such point which we should discuss now. But what are the different constitutional provisions which are very much relevant when we talk about the idea of delimitation? Now these three articles or these three concepts will primarily help you in understanding that why delimitation is needed and what is this idea of delimitation in India, right? So let's start with this particular thing as well. Hi everyone, we can start now. So article 82. So what is article 82 of the Indian Constitution? So it talks about the readjustment after each census. So article 82 is specifically related to the allocation of seats in the Lok Sabha to the states, and the division of each states into territorial constituencies must be readjusted by an authority determined by the parliament. So basically
अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है डिलिमिटेशन को लेकर के स्टूडेंट्स, जो आपको याद रखना है, that primarily the idea of delimitation was that it must be conducted after every census. And why delimitation is needed after every census? How long is this lecture will last? Approximately 25 to 30 minutes. So how delimitation is must be conducted after every census, और इंडिया में सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है. सेंसस इन इंडिया टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 10 years. सो बेसिकली जब 10 साल के बाद सेंसस होता है तो हमारे पास अपडेटेड पॉपुलेशन स्टैट्स आते हैं. तो उस अपडेटेड पॉपुलेशन स्टैट्स के बेसिस पर हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना चाहिए. दैट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 82 एंड इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द लोकसभा. सो रिमेंबर दिस, आर्टिकल 82 specifically talks about Lok Sabha delimitation related to Lok Sabha, whereas article 170 it talks about composition of seats in the state legislative assembly. It is similar to article 82, but the only difference here is that article 82 is specifically for the Lok Sabha, whereas article 170 is specifically for the state legislative assemblies. That is the only difference between article 82 and 170. Basically, chota bhai bada bhai, article 82 is the big brother and article 170 is the younger brother, right? Elder brother and younger brother. Now the Delimitation Commission Act is very important. Now students, please remember this when we talk about the Delimitation Commission. So enacted under parliamentary law, the commission orders holds the force of law and cannot be questioned or challenged before any court of law to prevent endless delays in election. So students, when we talk about the Delimitation Commission, so it is mandatory that Delimitation Commission must be constituted after every census to redraw the boundaries. But at the same time, we have to understand that Delimitation Commission is a body with so much of power that its decision cannot be challenged in any court of law, or its decision cannot be modified by a law made by the Parliament of India or State Legislative Assembly. अब अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई चीज बता दी है कि ये पर्टिकुलर सीट्स का जो बाइफर्केशन होगा वो इस हिसाब से होगा, तो उस चीज को आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन. वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन द पॉइंट, राइट? नाउ दिस डिलिमिटेशन कमीशन has a very important responsibility as well, इसीलिए इसको इतना पावरफुल बनाया गया. एंड करंटली प्लीज आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो करंटली डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द करंट डिलिमिटेशन कमीशन? शी इज अ वेरी पॉपुलर person at this point of time. We had a lot of discussion about her and we are talking about Justice Ranjana Prakash Desai. Right, Justice Ranjana Prakash Desai is the current chairperson of the Delimitation Commission of India. Remember that information, that might be relevant for your examination. And recently the government of India brought 131st constitutional amendment bill along with the delimitation bill. So keeping that particular thing in mind, this topic is extremely relevant for the aspirants of CLAT and ELIT 2027 along with the aspirants of all other law entrance examinations in our country. Now moving on to the next point. Now, how many times does this delimitation has been actually conducted in India? तो याद रखिएगा, अब तक इंडिया में टोटल 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, 1952, 62, 72 एंड 2002. 1952, 62. अब ये चीज आप इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि 1951 में सेंसस हुआ, फिर उसके बाद सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की. सो 4 times द डिलिमिटेशन कमीशंस have been set up in India, had been set up in India, and these years are 1952, 62, 72 and 2002. Now why there is a gap of 30 years? Why there is a gap of 30 years between the third and the fourth delimitation? Why not 1982 after 1972? क्योंकि इसके पहले तो पैटर्न यही था ना, 52, 62, 72. So why not 1982? Why it is 2002? That is one question that should pop up in every student's mind.
And to answer this particular question, we have to look at one of the most important constitutional amendment act, that is the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Now please keep this information in mind, students, that 42nd Constitutional Amendment Act 1976 is also known as the mini constitution of India. And the reason is very simple, because the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was brought during the period of emergency, and at that time the government basically tried to change the entire constitution, and that is the only reason why 42nd Constitutional Amendment Act is known as the mini constitution of India. Right, now moving on to the next point. So what happened in 1976? Frozen the seat allocation in the Lok Sabha to the states based on 1971 census until the year 2000 to ensure that states implementing family planning programs are not politically penalized. Now we know this, that the government of Indira Gandhi led by Indira Gandhi did a lot of things for the family planning and also to control the Indian population, and in order to achieve the same objectives they brought 42nd Constitutional Amendment Act 1976. इसने बेसिकली बोला कि जो अगला डिलिमिटेशन है वो 2000 तक हम फ्रीज करते हैं, 2000 तक इंडिया में कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा, और जो भी डिलिमिटेशन होगा या जो भी डिलिमिटेशन हुआ है उसको हम फ्रीज करते हैं, और वो जो डिलिमिटेशन हुआ था दैट डिलिमिटेशन टुक प्लेस as per the population census of 1971. So 1971 के population census के basis पर 1972 में delimitation commission setup किया गया था, और 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट said कि 1971 के population census के basis पर जो delimitation हुआ है ये exactly ऐसा रहेगा till the year 2000. Now what happened in 2000? Now in 2000, in the year 2000, the 84th Constitutional Amendment Act 2001 was introduced just after the year 2000. Now what happened in 2001? So nothing relevant as such, but 84th Constitutional Amendment Act, extended the delimitation for another 25 years. 84th Constitutional Amendment Act said कि 2026 तक अब कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया जाएगा, बट 2026 के बाद जो पहला पॉपुलेशन सेंसस होगा उसके बेसिस पर नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा. नाउ दिस माइट साउंड क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिकॉज अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. So 42nd Constitutional Amendment Act 1976 said कि इंडिया में अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर सीट्स को रीड्रॉ किया था. हम इस पर्टिकुलर चीज को ईयर 2000 तक एक्सटेंड करते हैं. फिर 2000 के बाद 2001 में जब 84th Constitutional Amendment Act 2001 इंट्रोड्यूस किया गया, एट दैट टाइम द गवर्नमेंट सेड दैट वी विल एक्सटेंड दिस फ्रीज फॉर अनदर 25 इयर्स, मतलब 2026 तक अब इंडिया में कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया जाएगा. 2026 के बाद जो पहला पॉपुलेशन सेंसस होगा उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन कमीशन हम सेटअप करेंगे. नाउ 87th Constitutional Amendment Act is equally relevant. It allowed for the restructuring and boundary changes of constituencies within states, but strictly based on the 2001 census without altering the total number of seats allocated to each state. Now 87th Constitutional Amendment Act 2003 made things quite flexible. अब 87th Constitutional Amendment Act ने क्या किया स्टूडेंट्स? 87th Constitutional Amendment Act was like कि भाई अब अगर मान लेते हैं कि यूपी के पास में 80 सीट्स हैं, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हम इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीट्स, बट हम इंटरनली 2001 पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर हम इंटरनली बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाज प्रोवाइडेड बाय 87th Constitutional Amendment Act 2003. Now these are the three constitutional amendment acts. One is from 1976, the other one is from 2001, and the last one is from 2003, which are relevant for your examination. Now students, moving on to the next aspect of this particular concept. तो हम delimitation commission के बारे में भी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. We have discussed almost
everything about the Delimitation Commission. We have already also discussed a lot of facts related to the how this entire idea of delimitation works in India. We also discussed about 42nd, 84th and the 87th Constitutional Amendment Act of 1976, 2001 and 2003 respectively. We also discussed about the chairperson of the present Delimitation Commission. Right. So now we can move to the next point, the core conflict, the power of the purse versus representation. We are a democracy. India is world's largest democracy and we celebrate the fact a lot. But at the same time, the debate is about the fact that whether the states which are contributing the most in the state's purse, should that be a basis for the representation in the parliament, or we should follow the similar or we should adopt the similar approach जो हर डेमोक्रेसी में होती है कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे. सो डेमो इज अ कीवर्ड जिसका मतलब ही होता है लोग, पीपल. अब तो हम बेसिकली कभी भी डेमोक्रेसी में टैक्स वाला या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को कंसीडर ना करते हुए हम हमेशा पॉपुलेशन को ही कंसीडर करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ So this is all about this particular concept. Now let me tell you one thing, that whether you attend the class or not, it's up to you. But my suggestion to you would be that we discuss so many facts in these sessions, and consortium of NLUs or National Law University Delhi will ask the facts only, because आपका subjective examination में you have an objective exam, और objective exam में current affairs और GK में सिर्फ आपसे facts पूछे जाएंगे, आपका opinion नहीं. So the students who are skipping these sessions, I'm quite scared, or I'm quite scared about the fact कि अगर कल को आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स में से कोई चीज आ गई, then you will have that immense amount of guilt कि काश हमने सेशंस अटेंड कर लिए होते. And trust me on that when I say this, कि this is the easy way to cover the important articles of the newspaper, क्योंकि कंसर्शियम हमेशा एक ऐसा टॉपिक आपसे पूछेगा जिसमें पोटेंशियल हो 5 क्वेश्चंस पूछे जाने का, क्योंकि मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछते हैं एक पैसेज से, राइट. सो दैट फैक्ट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड कि हम वही टॉपिक सिर्फ डिस्कस करते हैं जो क्लैट और एलिट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, अलॉन्ग विद द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो प्लीज इन सेशंस को अटेंड करिए. हम लोगों के पास में शायद वो फोरसाइट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है जहां पर हम आपकी हेल्प कर पाए कि क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की, हम उन्हीं को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं. Now the next topic is students related to the issue of Justice Yashwant Varma. So we know this, that Justice Yashwant Varma was a sitting judge of the Delhi High Court when a cash pile of rupees 25 crore was recovered from his place. When a fire broke out at his official residence, he was not present at that time, but his family member made a call to the fire department, and when the fire department came, they discovered a cash pile of rupees 25 crore. Somebody recorded a video, somebody recorded a video of that, and it was made public on different social media platforms. After this particular video was published on different social media platforms, the Supreme Court has taken the due consideration of the same. And in the initial investigation which was being conducted internally by the Supreme Court of India, it was discovered that primarily the cash belonged to Justice Yashwant Varma. And after that, a removal motion was initiated against Justice Yashwant Varma on the grounds of proven misbehavior, because it was misusing the powers which these powers are not given to Justice Yashwant Varma per se. These powers were given to a judge of the High Court. So for misusing the power, a removal motion was initiated, and after that motion was accepted, an inquiry committee was constituted under the Judges Inquiry Act 1968. A 3-member committee was constituted under the chairmanship of a sitting Supreme Court judge, including 1 Chief Justice of a High Court and 1 eminent law member. Now that committee had submitted its report in the month of May, but before that, Justice Yashwant Varma resigned from his post, and he was basically transferred from the Delhi High Court to the Allahabad High Court while this investigation was being conducted by the inquiry committee constituted under the Judges Inquiry Act 1968.
Now students, the most important aspect that we have to discuss in this particular topic is कि मान लेते हैं there is a person X who is a sitting high court judge. Now taking bribe or accepting money is a kind of criminal activity. It is absolutely prohibited. Let's assume there is a person X, उसने वो किसी एक लेट्स से इलाहाबाद हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने जज रहते रहते, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग. आई हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स द कोर्ट established by law. I have no ill feelings at all. तो अगर उनके घर से 25-30 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, now this is a separate crime, but रिमूवल मोशन इनिशिएट होने के बाद वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं. तो क्या जो उन्होंने एक सेपरेट क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, क्या वो उस पर्टिकुलर पनिशमेंट से भी एब्सॉल्व हो जाएंगे जो उन्होंने एक सेपरेट क्राइम किया है? अब जब भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं, दिस इज वन ग्रे एरिया जिसमें आज तक कोई भी प्रॉपर डिस्कशन हुआ ही नहीं है कि इफ अ पर्टिकुलर जज has been found out or it has been discovered that that particular judge was misusing the powers attached with the office, then what will happen with him or her? This is again a very gray area. वो रिमूवल मोशन इनिशिएट होता है, इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, मीनवाइल वो जज क्या करते हैं, फटाफट अपने ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं और वो सारे क्रिमिनल चार्जेस से एब्सॉल्व हो जाते हैं. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मिस्टर ओम बिरला, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, हैज डिसाइडेड कि जो इंक्वायरी कमेटी ने उनको रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट को वो लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे. दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. And now this particular information is relevant to understand the title of the article. India's parliament must not stage its Cadaver Synod. Now what is this idea of Cadaver Synod? So it is a story date back to 897, common era of 897. And what is this story? So उस टाइम पर एक पोप थे, पोप स्टीवन 6. बेसिकली उनकी डेथ हो जाने के बाद जो उनकी एक्सह्यूम्ड बॉडी थी, जो बॉडी आपकी डिकम्पोज होने लगती है, उस बॉडी को एक्सट्रैक्ट करके, एक्सकवेशन करके उनकी बॉडी को निकाला जाता है. उनको सारे कपड़े वपड़े पहना करके उनको प्रॉपर ड्रेस, जैसा एक पोप का ड्रेस होता है, उनका एक ट्रायल कंडक्ट किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, उस टाइम पर क्या हुआ, आपने जो उस पर्टिकुलर ऑफिस का जो ट्रस्ट था लोगों की नजरों में, उसको आपने कम किया. So basically author of this article is suggesting the same thing कि क्या ऐसा करने से जब जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऑफिस से ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, तो क्या ऐसा करने से जो ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट जज है, क्या हम उसकी पावर को, क्या उस ऑफिस के साथ में जो ट्रस्ट अटैच होता है, क्या हम वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करेंगे? दिस इज द एंटायर लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल. इंडियाज पार्लियामेंट मस्ट नॉट स्टेज इट्स कडावर साइनॉड. The trial served no real purpose, damaged the institutional credibility of the church and degraded the tribunal. So this particular, now the author of this article is suggesting that this entire presentation of report before the house will not do something substantial, but eventually it will degrade or disregard the authority of the High Court and the Supreme Court. So there is no need to do this. और इसके साथ साथ में पार्लियामेंट के साथ की भी जो अथॉरिटी है, उस पर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए, आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? यस और नो? और आज लाइक वाइक कर ही दीजिएगा आप लोग वीडियो को, मतलब आप लोग को बोलना पड़ता है, बट आई डोंट फाइंड इट रेलेवेंट कि आप उसको बार बार बोला जाए. बट अगेन, इफ यू फील दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गुड, देन यू मे लाइक द वीडियो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So let's draw the modern parallel. Let's compare. Sir, somebody has asked, so please make weekly current affairs lectures. Okay, we'll keep that in mind. So instead of doing the weekly current affairs, what we are doing is that we are solving those weekly current affairs questions. But yeah, we'll take your consideration as well.
Please tell what to write in the notes. You just write facts. You don't have to write anything else. You just write facts, nothing but the facts, because consortium will always ask facts, nothing but the facts. So you must write facts, right? Now, what is the modern parallel? So the speaker of the Lok Sabha speaker announced that the report of the Judges Inquiry Committee regarding allegations against the former Justice of the Delhi High Court, Mr. Justice Yashwant Varma, will be tabled in the monsoon session of the parliament, which is set to begin on July 20th, 2026. तो 20th जुलाई को दो चीजें एक्चुअली में होनी है. पहला तो मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा और दूसरा जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट तक एक प्रोटेस्ट था. अभी हम लोगों ने वी जस्ट शॉट समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव. वो अभी पब्लिश ही होने वाला. दिस इज आई गेस अ यूट्यूब शॉट जो रिसेंटली आज सुबह सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस ने रिमूव किया जंतर मंतर से एंड शिफ्टेड हिम टू सफदरजंग हॉस्पिटल आफ्टर एन ऑर्डर वाज पास्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट. सो यू कैन वॉच दैट एज वेल, राइट. सो बेसिकली 20th जुलाई 2026 को ये सेशन मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला और इसके स्टार्टिंग होगी बेसिकली जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट को प्रेजेंट करके, राइट. सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली, थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली फॉर जस्टिस यशवंत वर्मा एज वेल, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा जो आज तक इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा. So he became the first person जिनके अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई है. The conflict. Justice Yashwant Varma resigned with immediate effect on April 9th, 2026, while the report of the committee was submitted on May 18th, 2026. Now, what is the big question? Now, the big question is, can Parliament legally continue with impeachment and removal proceedings against an individual who no longer holds the constitutional judicial office? Now, the question is very simple to answer. हम impeachment motion या removal motion क्यों लेकर के आते हैं? Why we bring impeachment motion or removal motion against any particular individual? Anyone who would like to answer the question? Why we bring impeachment or removal motion against any judge or any dignitary? The very idea to bring the removal or impeachment motion is to remove that particular office bearer from the office. तो अगर किसी ऑफिस बेयरर ने अपने ऑफिस से 9th अप्रैल 2026 को रिजाइन कर दिया है, तो क्या पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन उस रिमूवल मोशन के साथ कंटिन्यू कर सकता है या नहीं? क्योंकि अगर रिमूवल मोशन पास भी हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा? दैट द जज हैज टू वेकेट द ऑफिस एंड जज हैज ऑलरेडी वेकेटेड द ऑफिस. So what is the relevance of this particular removal motion is the question of the author of this article, and that is something that we have to understand here. इसीलिए जो इसका टाइटल था इस आर्टिकल का, that was India's Parliament must not stage its Cadaver Synod. जैसा पुराने टाइम में हो चुका है 897 कॉमन एरा में कि एक मरे हुए पोप को उसकी डेड बॉडी को निकाल के उसको कपड़े पहना करके उसका ट्रायल किया गया, जिससे पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ही कम हो गई अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूनल, राइट. तो यही है बेसिकली. अब ये चीज इक्वली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस विल नॉट exonerate a person. It doesn't matter whether that person is a common rickshaw puller or a judge of the high court, right? It doesn't exonerate someone, right? So let's continue with our discussion now. Now these are the various constitutional and statutory provisions related to the removal of a Supreme Court and a High Court judge. Article 124 clause 4 and Article 217 clause 1 subclause B of the Constitution of India 1950 establishes the exact procedure for the removal of a Supreme Court and a High Court judge. Students, please remember this. There are only two grounds for the removal of a Supreme Court and a High Court judge, and these two grounds are proven misbehavior and incapacity. Right, proved misbehavior or incapacity through a special majority in parliament. And always remember this, that the impeachment or the removal motion must be passed by a special majority of the parliament. And what is the special majority of the parliament? Majority of the house plus 2/3 present and
2/3 present and voting. Right. Now, what is Article 121? It strictly prohibits any discussion in Parliament regarding the conduct of judges in the discharge of their duties except during a live motion praying for their removal. Now, let's understand one thing, and I guess the idea of Article 121 is absolutely clear on that point, students. See, Article 121 says this कि जब कोई Supreme Court judge अपने ऑफिस को होल्ड कर रहा है while performing the duties, जब कोई सुप्रीम कोर्ट जज अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के टाइम पर कोई कंडक्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई कंडक्ट कर रहा है, आप उस कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. बट टेकिंग ब्राइब और एक्सेप्टिंग मनी is not something which you do in the course of the office course, which you do not do in the course of holding the office. So it is actually, it's not related to your performance of duties while holding the office. So it will have no bearing of Article 121, because Article 121 is purely restricted to the judge while holding the office. Right? Then we have the Judges Inquiry Act 1968. Students, please remember this. The Judges Inquiry Act 1968 is very relevant, and it is relevant in the same context कि भाई जो पार्लियामेंट के जो डिग्नेटरीज होते हैं, whether it's the Speaker of the लोक सभा और the Chairman of the राज्य सभा, वो Judges Inquiry Act 1968 के अंडर ही इन्वेस्टिगेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो चेयरपर्सन रहते हैं. उसके साथ साथ में एक सिटिंग चीफ जस्टिस होते हैं किसी हाई कोर्ट के, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड लीगल और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इज द 3 मेंबर कमेटी के पार्ट होते हैं, जो उस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now, resignation as a unilateral constitutional act. Now, a constitution bench of the Supreme Court held that a judge's resignation is a unilateral constitutional act. It requires no acceptance by the President of India or any other executive authority to take effect. Now, this is something which we have to understand, and this is the last relevant information from this particular topic which might be relevant for your examination. कि अगर किसी सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज ने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे दिया है, तो सिर्फ रेजिग्नेशन दे देने के बाद ही दैट पर्टिकुलर जज सीजेस टू होल्ड द ऑफिस. उस पर्टिकुलर रेजिग्नेशन का फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट नीडेड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. लेट्स से आई एम अ हाई कोर्ट जस्टिस, मैंने अपना रेजिग्नेशन द्रौपदी मुर्मू जी को दिया. मेरा रेजिग्नेशन देना ही इस चीज के लिए सफिशिएंट है कि मैं अपना ऑफिस होल्ड करना सीज कर दूंगा. मेरे रेजिग्नेशन का फॉर्मली प्रेसिडेंट द्वारा या प्रेसिडेंट, इट इज नॉट फॉर्मली रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन, बट इवन टेंडरिंग माय रेजिग्नेशन इज सफिशिएंट to bar me from holding that particular office. Right. The snap link, the constitutional relationship ends instantly at the moment of the judges choosing. Once resigned, the individual is no longer a constitutional functionary. ठीक है, तो जज ने अपना रेजिग्नेशन दिया, ही होल्ड्स टू होल्ड द ऑफिस. Established parliamentary precedent is of Justice P.B. Dinakaran. Resigned while impeachment proceedings were pending. The inquiry committee was dissolved. So basically Justice Dinakaran का केस है 2011 का, उनके अगेंस्ट रिमूवल मोशन इनिशिएट किया गया था, इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बट उन्होंने जैसे अपना रेजिग्नेशन दिया, इंक्वायरी कमेटी डिसॉल्व हो गई. फिर जस्टिस सौमित्र सेन का भी 2011 का केस है, ही वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज जिनके अगेंस्ट रिमूवल मोशन इनिशिएट किया गया था. ही रिजाइंड आफ्टर Rajya Sabha had already adopted the removal motion. Despite the vote, Parliament immediately ended the proceedings, recognizing that resignation extinguishes the jurisdiction to remove. तो बेसिकली जस्टिस सौमित्र सेन का भी सिमिलर केस है कि अब, बट जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में नहीं हुआ ना. 9 अप्रैल को उन्होंने रिजाइन किया और 18 मई को आई गेस या 29 मई को उनका जो रिपोर्ट था इंक्वायरी कमेटी ने वो एक्सेप्ट किया, वो सबमिट किया. और होना यह चाहिए था कि अगर 9 अप्रैल को उन्होंने रिजाइन किया था तो उसी समय पर सारी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं. राइट. सो बेसिकली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट एन एग्जांपल कि भाई अगर आप करप्शन करेंगे, आप पैसे लेंगे, आप घूस लेंगे, आपके घर से पैसे मिलेंगे, तो हम आपके पीछे पड़े रहेंगे तब तक जब तक हम ये पूरे देश को ना बता दें कि आपने क्या किया और आपने किस तरीके से इंस्टीट्यूशन की इमेज को टार्निश किया. Right. So moving on, political scrutiny and weaponization. So with that is also discussed erosion of separation of power. Judges could be held hostage to political retaliation, post-retirement, severely undermining judicial
So this is something which I don't understand कि ऐसा क्यों author का मानना है कि वो absolve हो जाएंगे, but nevertheless. So this is all about today's session, guys. Thank you so much for watching this particular session. We'll see you tomorrow at the same time. And if you loved the session, if you liked the session, then please do like the video. And yeah, that's it from my side. Thank you so much, guys. We'll see you tomorrow at the same time. Till then, just take a good care of yourself and people around you. Bye bye and take care.